like I'm very high, you can say roughly speaking, on my sexual/creative energy, right? I think Osho talks Mm-hmm. about this कि जो थोड़ा artistically ज़्यादा inclined होते हैं towards various pursuits, I think they are more high, roughly speaking, in their just sexual energy as well. So मैं यूजुअली Mm-hmm. ऐसे करता हूँ, लाइक एक ब्लॉग है, लाइक सबस्टैक का एक पोस्ट सा खोला है लेटेस्ट, राइट? उस ब्लॉग को टाइटल किया Mm-hmm. हॉर्नी थॉट्स. सो व्हेनेवर Mm-hmm. So hi everyone, whenever today let's we say कोई have thought Shubham आता है. Behel with us. So लाइक इन्हें मैं मिला था अपनी पहली कंपनी में, एंड ये यूजुअली एक टेक नर्ड थे उस टाइम पे, तो हमारा उतना उठना बैठना नहीं था टेक्निकली स्पीकिंग, क्योंकि मेरी प्रोफाइल अलग थी एंड इनकी प्रोफाइल अलग थी, बट somehow we hit it off once we started talking, क्योंकि शुभम बाय नेचर एक बड़ी क्यूरियस इंसान है. ये उंगल करते रहते हैं हर चीज में ना, एंड लाइक ही इज वन ऑफ दोस फ्यू इंजीनियर्स हु हैव अ सेंस ऑफ टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, राइट? इनके philosophical perspectives, deep secrets and all. So he's just not a tech nerd. He's a complete holistic package of tech nerd with philosophical talks and other things. So currently I think Shubham is running his own company, and he's working hard at it. So one of his core passions is teaching, and yeah, that's pretty much it from Shubham Bale's point of view. So thank you Shubham, like आप आए इसे पॉडकास्ट पे टाइम निकाल के. सो आप बताओ कैसा क्या चल रहा है सब? How's everything going? Everything is going fine, like working in a startup, right? So Hmm. if I talk about that a little bit, Hmm. so you have to play a lot of roles going ahead, manage a lot of things. Hmm. तो हाँ ठीक चल रहा है. It's like और करो startup, सही right? बात है. अग्रीड. आई थिंक हमारी स्टार्टअप वाली एक फाउंडेशन वहां से भी आती है मयंक सर के थ्रू, राइट? वंस लाइक ही काइंड ऑफ ग्रूम्ड हाँ. अस उस सेंस में कि यार हाँ, मतलब हर जगह जाओ, हर सीन पानी करो, एंड लाइक या आई थिंक एक वो एंटरप्रेन्योर वाला सीन भी होता है, राइट? कि आई थिंक जिनका एक नेचर होता है मोर एम्बिशियस, दे आर naturally driven to this line of thinking these days. So what do you think about the startup culture entirely? Like आपको क्या लगता है आजकल, क्योंकि हर कोई स्टार्टअप कर रहा है, राइट? टेक्निकली स्पीकिंग, what do you feel? Like, is it good? Is it bad? Like, what's your take on it? So if I present a perspective, so कुछ लोग like 9 to 5 से भागने के लिए स्टार्टअप करते हैं, like apart from it, अगर तुमने TVF का पिक्चर्स देखा है, हाँ देखा है, सही सीरीज है. राइट? तो वो थोड़ा सा फैड में ला रहा था कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज कूल, बट मोर ओवर व्हाट आई फील इज लाइक दूर से हर चीज बड़ी कूल लगती है, राइट? सो अ लॉट ऑफ द टाइम्स लाइक व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, लाइक यू आर इनटू द कॉलेज एज वेल, ठीक है, कोई सीनियर तुम सुनते हो यार गूगल में चला गया या फिर किसी और कंपनी, बट तुम्हें उसकी यू डोंट नो द रोल एग्जैक्टली कि वो कर क्या रहा है वहां पे, तुम्हें उस ब्रांड नेम से प्यार होने लग जाता है. तो आई थिंक सो, तो अभी वो चीज कहीं ना कहीं चल रही है कि हाँ मतलब यार कि चलो करते हैं स्टार्टअप. सो इफ यू हैव अ प्रॉब्लम दैट यू रियली वांट टू सॉल्व, कि तुम्हारे दिन में कि यार ये प्रॉब्लम हमेशा से करनी थी, या मे बी तुम अभी देख रहे हो कि यार ये प्रॉब्लम से इन लोगों पे चेंज आ सकता है, सो आई थिंक दैट इज वेयर यू शुड गो. या डेफिनेटली. So that is me. Yep. हाँ जी. अच्छा, okay. So I think like roughly speaking, startup से हमारी I think fundamental needs भी बड़ी cover होती है, right? There's this drive of happiness कि यार ठीक है, हम अपनी happiness से kind of derive कर रहे हैं. And yeah, mostly I think people start up for the sake of starting up. It's very few people think like एक problem solve करने वाले perspective से. उन्हें लगता है कि ठीक है फंडिंग उठा रहे हैं हमसे या कुछ भी ऐसे, लाइक वो सपने होते हैं ऑफ कोर्स बच्चों के, बट आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज. सो लाइक व्हाट डू यू थिंक कि मेजर प्रॉब्लम्स, लाइक ऑफ कोर्स इंडिया में देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दीस डेज, राइट? सो what according to you, like as per your experiences, are the major problems that like we are currently facing and that needs to be solved on a priority wala basis? Okay, so if you look at India, what is the greatest power that you think India has? Like one greatest thing. I think youth hoga. I know it's a cliched Exactly. thing, but yeah, we have No, the youngest exactly. thing. Yep. So if you think in terms of some different countries, so these developing countries, they are facing this issue, right? So the fertility rates that should be around 2.1, I think, right? So that is not there, that is below that, right? So Japan में जैसे कि if you see people are coming in, people are coming in, so in Japan there are less young people in the workforce,
they have to work more and more and more. So what I'm telling here is कि if you look at India and China, right? China also has the same superpower, right? अभी उनकी population ज़्यादा है, धीरे धीरे decline हो रही है. That is something else. But if you think about it, India में I feel the biggest problem that you said is youth is not, educated in such a way that they can go ahead and think for themselves. Like a lot of people are, yes, but a lot of people are still there out there, who are not that educated to think. They are educated enough to look into maybe books, read books, and they are not able to get the knowledge, transmute it into applicable things, right? The knowledge is like just theoretical. So that is something I feel there is a problem with. Apart from it, thinking on that, if this trend continues, like going ahead, we are focusing on rote learning going ahead, so eventually the youth would be the biggest liability, because these guys are not then getting jobs. If you look at the skill labor, right, that China has, they offer it for cheap, and that is one reason they are offering so many services, right? Going ahead, like they are offering so many cheap things going out there, but India has that shortage of skilled labor, and that can only be fixed by means of going ahead with a good education. So that is one major problem, I think, in India. I think एक reason ये भी होता है कि हम educate होना भी चाहते हैं more towards pleasing our hormones. I think that is also one major problem with youth these days, that you can see we are too much educated in pornographic content and filling our mind with such type of content. अगर आप कोई भी self development या let's say कोई learning course भी उठा के देखते हो YouTube पे जो free का पड़ा है, right? So एक बड़ा कॉमन ट्रेंड आई थिंक, मेरे आपसे पहले भी डिस्कशन हो रही थी कि स्टार्टिंग में तो मस्त होंगे 4 से 10 लाख व्यूज, एंड तक आते आते लास्ट वीडियो तक आते आते इट्स जस्ट लाइक 20-30,000 जो पूरा कंप्लीशन में भी कंप्लीट करते हैं. आई थिंक दैट इज आल्सो वन प्रॉब्लम कि we don't know how to direct our energies, roughly speaking, in a more productive way, right? So like, how do you solve this problem for yourself? I know that we also being youth, right? I think for us also कई बार ऐसा लगता है, right? There are excessive sexual thoughts or let's say lustful thoughts, right? So how do you channelize those thoughts, like let's say in a more productive way? Like ऐसे कोई tricks, tips है आपके पास, आपके arsenal में, which can help the general people? Okay, so when there is an outburst of energy, I usually go to my artistic side, right? I actually like to write poetry as well, so I'm able to channel my energy there, right? So it might be different for different people going ahead, right? So that is one thing, you can channel your energy into say art or something, or maybe look at something that you always want to create, right? Maybe creation of something else, right? So that is majorly my point of view. What would you like to present? I'll need to think on that. अच्छा like, interesting question. Great. यार मैंने क्या किया है, मैंने ना एक बड़ा जुगाड़ देखा है, बड़ा तगड़ा भी recent hack मिला मेरे को ना, तो like I'm very high, you can say roughly speaking, on my sexual/creative energy, right? I think Osho talks about this कि जो थोड़ा artistically ज़्यादा inclined होते हैं towards various pursuits, I think they are more high, roughly speaking, in their just sexual energy as well. So मैं usually ऐसे करता हूँ, like एक blog है, like Substack का एक पोस्ट सा खोला है लेटेस्ट, राइट? उस ब्लॉग को टाइटल किया हॉर्नी थॉट्स. So whenever let's say कुछ थॉट आता है ऐसे, राइट? So I just write the creepiest of thoughts I have in that, and like it just lasts for 5 minutes, and then after that I start writing content or creating content. That is my way out of it, because I see कि अगर मैं उस चीज में फंसे रहा हूँ, राइट, it would definitely force me to let's say click on a porn or something, right? उस तरफ mind चले ही जाता है after certain days, या वो lurk कर रहा होता है unconscious में, right? So मेरा हमेशा line of thinking रहता है कि ठीक है, अगर thoughts हैं भी, so I just get them out on a paper or something, rather than like वो अंदर ही मेरे अंदर manifest हो रही है, and वो थोड़ा outburst of energy एक थोड़े अलग sense में जा रहा है जिस तरफ मेरे को अपनी outburst of energy नहीं चाहिए. That is the way I found that works for me usually. But yeah, it's a weird way, but it works. Yeah, so that is what I feel. One other way, like just while you were talking, is being conscious of your actions, right? And what your actions might lead you to. It is a bit difficult to do that at times. You can't always predict कि कहाँ जा रही है चीजें.
बट तुम ये चीज सोच सकते हो कि मे बी ये जो एक्शन लेने वाला हूँ इसका क्या रिएक्शन हो सकता है, या फिर इज दिस एक्शन दैट आई रियली वांट टू गो अहेड एंड टेक, राइट? तो वो चीज फिर थोड़ा मुश्किल होता है. बट इफ यू डेवलप दिस, इफ यू क्वेश्चन what you are gonna do at times, maybe in the morning or something, so that majorly helps at times, right? आई थिंक इसका एक रीजन ये भी होता है कि लेट्स से पीपल आर एक्सेसिवली मैस्टरबेटिंग, लेट्स से, राइट? उन्होंने एक हैबिट बना ली है कि ठीक है हम इस कुर्सी में बैठ रहे हैं, इस बेड पे बैठ रहे हैं, तो एक वो इमोशनल ट्रिगर भी आ जाता है. इट्स वेरी हार्ड टू क्वेश्चन योर इमोशनल impulses या जो अंदर की आपकी लेट्स से एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स होती है, राइट, विद लॉजिक. आई फाइंड इट वेरी हार्ड कि अगर मतलब जितने भी लोगों से आई हैव टॉक की, लेकिन I think action is the way out, but yeah, definitely what you suggest is also very, I think, good way basically. But उस level तक पहुंचने के लिए it requires a certain level of self-awareness. Just I think I personally feel that, and for that also you need to work on one level. Great.